articulation between two joint surface, the two bones come together. When the articular surface of two bones comes together, they create the joint. Now joint have got so many varieties, हम उस varieties पे नहीं जाना चाहेंगे. Our concern is the synovial joint. Synovial joint. And what makes the synovial joint? The typical synovial joint is the knee joint. Hip joint is typical synovial joint. तो क्या होगा? दो articular surface होंगे. There will be two articular surface. They will be covered by the hyaline cartilage. Outside they will be covered by the capsule, which will connect ultimately the two bones. Because two bones are lying like this. So the one end is covered by the hyaline cartilage, and the bone of other end is also covered by the hyaline cartilage. You take like this. You take like this. So this much ilaka, this is being covered by the hyaline cartilage, and this is also covered by the hyaline cartilage. And above all, we have got a capsule over here. We have got a capsule over here. And this capsule alone cannot do anything because of the balloon-like structure of habits here. So it is being reinforced by these so many ligaments from outside. And after that, there is the presence of synovial fluid inside this. Because the synovial membrane line is this one, and so there is the presence of synovial fluid inside this. So this makes a typical synovial joint. For a synovial joint to be the two articular surface, two ends of the bone, where the articular surface is, they must come in contact with each other. Number one, their ends should be covered by the hyaline cartilage. Number two, and number three, their outside they should be covered by the capsule, and they should be reinforced by the multiple ligaments. Now our topic is the temporomandibular joint. Temporomandibular joint is number one, TMJ, is an atypical synovial joint. Now the word this A is there. ये दोनों का पन्नी निकाल दो, पॉलिथीन निकाल दो, पॉलिथीन निकाल दो, पॉलिथीन कवर खींचना मत, तो छूट जाएगा, खींचोगे छूट जाएगा. नाखून से निकालो ना, नाखून से. So we have got a typical. We are concerned with this temporomandibular joint and temporomandibular joint. The first letter which we have started, we have written the typical. Before the typical, we have written atypical. And what that atypical is? So before we must do a lateral aspect. Normal laterals को आप remember कीजिए, हम स्कल में भी आपको दिखाएंगे. So we have got पीछे से अगर हम काम करें, so we have got what is this? This one is the mastoid process. क्या है ये? Mastoid process. Mastoid process से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको मिलेगा? Mastoid process क्या मिलेगा आपको? जब आप आगे बढ़ेंगे तो then you will get this is mastoid process. Okay, and this one is the articular fossa. Articular fossa. This one is articular eminence or tubercle, and the diabetic arch. Diabetic arch over there. So ये आपको क्या मिला? That normal appearance. मैं भी आपको दिखा देंगे. So this one is the normal appearance. और यहीं पर मैं आपका है ये आपको ये जो आपका this much of surface है, we have got external acoustic meters. External acoustic meters. This is squamotympanic fissure. This one is squamotympanic fissure. Squamotympanic fissure. Correct? This one हम सब बोल में भी आपको दिखा देंगे. This is the squamotympanic fissure. We have got the external acoustic meters over here. We have got the articular fossa over here, and we have got the articular tubercle or the articular eminence over here,
and then the diabetic arch continue. This one is the normal lateral from this aspect you will see. Now below we have got the this one is the head of the mandible. This is the head of the mandible. Okay? This one is the ramus of the mandible and the body goes like this. This is the anterior, this is posterior, this is superior and this one is inferior. You have to mark first the anatomical points where the anterior is, where the posterior is, where the superior is, where the inferior is. So we have got the posterior over here, inferior. Now this one is the head of the mandible. Now this articular fossa, and we have got the tympanic plate over here. We have got the tympanic plate over here, So this tympanic plate, this squamotympanic fissure, all together they are the part of the temporal bone. They are the part of constituent of the temporal bone. This is the constituent of the squamous part of the temporal bone. This is the tympanic bone over there. Then we have got behind you have got the mastoid process over there. So they are all the constituent of the temporal bone. And so this articular fossa is situated on the undersurface of the squamous part of the temporal bone. And we have got the head of the mandible over here. Now when the head of the mandible comes in contact with the articular fossa and the articular tubercle, because this one is the very important, comes in contact with the articular fossa and the articular tubercle, the TMJ is being formed. Temporo-mandibular joint. Temporo stands for temporal, mandibular stands for mandibular, and joint is joint. So the temporo-mandibular joint is formed. Now we are with the atypical word. We will cover that one. So for a joint to be formed, what is required? Number one, it should be covered by the cartilage. So this is being covered by the cartilage, Okay, this is being covered by the cartilage. If दोनों का जो surface है, because the two bones to comes in contact with each other, if their surface will be not smooth, they will create a constant sort of friction over there, and the person will suffer from a lot of pain. So to reduce the pain, this surface will be covered by the articular cartilage. They are called the articular cartilage, and this articular cartilage, it could be of any nature, hyaline nature, fibrous nature, whatever it may be, but this is called the articular cartilage because it is articular means situated inside the joint. That's why the term articular has been coined. So the articular means joint. Now this much area is being covered by the articular cartilage. Next one is the fibrous capsule. The nature of this articular cartilage is not the, here we have got ये लोग ने क्या कहा था, hyaline cartilage. Hyaline cartilage. But this one is a fibrous cartilage. That's why when the articular cartilage is not made up of the hyaline cartilage, that joint is not the typical synovial joint. It becomes the atypical synovial joint. And the other examples are, other example of atypical joints, clavicle on the either end, joints with the sternum, joints with the acromion process. Both the acromioclavicular joint and sternoclavicular joint, they are also the example of the atypical synovial joint. So when the mandibular fossa, this is also known as the mandibular fossa. This mandibular fossa, articular tubercle, head of the condyle, head of the mandible, they comes in contact with each other, they create the temporomandibular joint. Now this temporomandibular joint is being reinforced by so many ligaments, so that it will be
अभी अगर ऐसे जाएगा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा इधर नहीं, तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनने के लिए इसको क्या होगा, ये मिटाने वाला और बढ़िया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको कुछ और स्ट्रक्चर से इसको रीइंफोर्स आपको करना पड़ेगा। Now the structure, the ligaments of the temporomandibular joints are number 1. Subjoint replacement क्या मिलेगा, capsule. Then you have got the lateral ligament, also known as the temporomandibular ligament. Then we have got the sphenomandibular ligament. And finally, we have got the stylomandibular ligament. So, they are the 4 ligaments which will reinforce this pendulum-like structure into a complete temporomandibular joint. Capsule is the capsule. This lateral ligament of temporomandibular ligament is called the true ligament. And these two are known as the accessory ligament. These two are known as the accessory ligament. Now, the capsule is attached to where the capsule will attach? The capsule is attached to the scapulotympanic fissure and to the nape of the mandible. From the articular tubercle and articular eminence, outside the articular eminence, and this will come like this. This will attach to the nape of the mandible, below the nape of the mandible. It will attach on the either side of the neck of, below the neck of the mandible. This is the attachment of the capsule. Posteriorly, this will attach to scapulotympanic fissure. Anteriorly, it will attach to the articular tubercle or eminence. Anterior to the articular tubercle or eminence. Because articular tubercle, entire articular tubercle is inside the temporomandibular joint. This plays a very important role. This entire temporomandibular joint inside the, it is inside the temporomandibular joint. Entire articular tubercle. So this one is the capsule. The capsule will attach posteriorly to the scapulotympanic fissure and anterior, just anterior to the this articular tubercle and to the neck of the mandible. This is the lower attachment. Now we have got the next attachment is the temporomandibular ligament or the next ligament is the lateral ligament. Now this lateral ligament is attached to the articular tubercle and is goes downward and down. क्या करेंगे वो? कहाँ जाएंगे? डाउनवर्ड आर्टिकुलर tubercle में अटैच रहेंगे और कहाँ आएंगे? नेक ऑफ द मैंडिबल के पास. कहाँ आएंगे? नेक ऑफ द मैंडिबल के posterior surface. नेक ऑफ द मैंडिबल के posterior surface पे and this will come like this and it goes downward and backward. So while going downward and backward from the articular tubercle, what does it do? That it reinforces the capsule in its lower end. Inferior जो capsule है आपका क्या करेगा उसको? Lower end में जब कोई चीज इस तरह से है उसको ऊपर इस तरह से कोई जाके चिपक जाएगा क्या करेगा उसको ताकत देगा, उसको reinforce करेगा. So it reinforces the capsule from the inferior arm, from the anteroinferior posterior तक जाकर उसको reinforce करेगा. This is the job of the lateral ligament. This is also known as the true ligament, also known as lateral ligament. So this lateral ligament will reinforce this one. Now this joint is divided into two parts by presence of the articular disc. There are two joints in the body, two synovial joints, which are divided into two compartments, upper and lower. One is the knee joint, another is the TMJ joint. So in TMJ, in the knee joint, the meniscus is so opposed to the bony surface, though they have divided the joint into upper and lower compartment,
but that is not the typical example of the upper and lower compartment. Here we have got a lot of the entire function of the temporomandibular joint is due to this upper and the lower compartment. This upper compartment and the lower compartment plays a very important role, very crucial role to decide the course of action of the movement of the temporomandibular joint, and that is the most important aspect of the temporomandibular joint. So here we have got there is a presence of capsule inside it. The capsule what is the shape of the capsule? This articular disc. This is concavo-convex superiorly and this is concave inferiorly. ऐसा ये concavo-convex superiorly and concavo-convex superiorly and concave inferiorly. Number one. Number two, this articular cartilage in the sagittal section, when you will go through the sagittal section, what you will find out that this is divided into 5 parts. Number one knot, second knot. This is called the anterior extension. This is anterior thickening. This is the intermediate thickening. This is the 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 knot. So this was the anterior extension. This is the anterior knot or anterior band. Then you have got the intermediate zone. Then you have got the posterior band, and this is one is known as the bilaminar extension or retrodiscal part of the articular disc. This is called the retrodiscal part. ये देखिए हमने यहाँ पर इसको 2 भाग में पढ़ा। क्या क्या? 2 भाग में यहाँ पढ़ गया। Anteriorly, this is attached to the capsule of the temporomandibular joint. Attached to the capsule of the temporomandibular joint, or anterior में we have got the attachment of the lateral pterygoid से ये मार्क कर दिया। क्या हुआ? Lateral pterygoid, जब insertion of the lateral pterygoid पढ़ेंगे आप, तो insertion of the lateral pterygoid had to be mentioned that it is inserted into the capsule of the temporomandibular joint, articular disc of the temporomandibular joint, and pterygoid fovea to the back. So it comes, lateral pterygoid muscle comes up to this point. So this will get attached to the anterior extension of the articular disc. So this will attach to this one. Number one. Number second, the intermediate zone is the thinnest one. Intermediate zone is the thinnest one. Posteriorly, we have got the extension. This is called the bilaminar extension, and the posterior, once you see bilaminar, so it bifurcated. So one in the superiorly attached to the spermatic fissure, and inferiorly it is again attached to the capsule and the neck of the mandible. A capsule or neck of the mandible we have attached. And the second important thing is that in this retrodiscal area we have got the presence of the vein and the artery and the nerves. The entire disc except the bilaminar area, anterior extension, anterior or intermediate zone, posterior band, they are devoid of any arterial or the nerve supply. So they are avascular zone. They are the avascular zone. They do not have any sort of venous or the arterial or nerve supply. But this bilaminar extension, they have got the presence of vein, artery and the nerve. Vein, artery and the nerve. फोन में आप देखो now you see this. This one is the mastoid process. This one is the mastoid process.
Then you have got external costic this external costic Here you have got the external costic Okay. Then you have got the mandibular fossa over here. This is the mandibular fossa. You have got the mandibular fossa over here. Then we have got the articular tubercle. This one is the articular tubercle. This one is the articular tubercle. For to know the movement of the TMJ, which is the toughest to understand, to know the movement of the TMJ, we have to understand what is articular tubercle is, what is articular disc is, and how this compartment is divided into two parts. This, if we understand these three things, then we can understand this one. So this is clear to you. And the second important thing which I want to show you that, see this one. This one is the stelloid process. Sorry, this one is the spine of the sphenoid. This is the spine of the sphenoid. Here we have got the spine of the sphenoid. Okay? See this one. This is the mandibular fossa. Clear? Give me two. Here we have got the presence of the spine of the sphenoid bone. You got window. And here we have got the presence of the stelloid process. Clear? So, anteriorly we have got the spine of the sphenoid bone. In the middle we have got the temporomandibular joint, and posteriorly we have got the presence of the stelloid process. Clear? Posteriorly we have got the presence of the stelloid process. And so, my next topic is the sphenomandibular ligament. So, sphenomandibular ligament, what it will do? If two things are coming, one is coming from the anterior and other is coming from the posterior, what it will do? This will lift it up. अगर इस टेबल को हम, ये टेबल ऐसे है, एक यहाँ से एक बैंड पकड़ ले, एक बैंड यहाँ इसको पकड़ ले, क्या होगा? आराम से ये लिफ्ट अप हो जाएगा. So on the either side you see this if this is your TMJ, what you will figure out? कि यहाँ से एक structure, this is the spine of the sphenoid. How you will identify the spine of the sphenoid bone? Foramen ovale के ठीक posterolaterally, you have got a small foramen, which is called the foramen spinosum over there. Foramen spinosum, और उस foramen spinosum के ठीक पीछे जो stump आपको नजर आएगा, वही है spine of the sphenoid bone. Spine of the sphenoid bone, usually it's very tough to find out in the bone, which is so many holes here, because so many students have gone through this bone, so it will be very difficult to find out this one. So this one is the spine of the sphenoid bone. From the spine of the sphenoid bone, what happens? There is a ligament which goes from the spine of the sphenoid bone to the mandible, and this is known as the sphenomandibular ligament. From here, the one ligament is going from here and attached to the lingula of the mandibular foramen. And what is the lingula? This one is the mandibular foramen. The upward projection, medial projection on the medial side of the mandibular foramen, we have got a projection over here. And this is known as the lingula. This one is known as lingula. And you see this. From the spine of the sphenoid bone, there goes a ligament, and this ligament is known as the sphenomandibular ligament. So one end of the sphenomandibular ligament is attached to the spine of the sphenoid bone, and other is attached to the lingula of the lingula on the medial surface of the ramus of the mandible, or medial to the mandibular foramen. इस जगह पे. Now you have got दोनों ही स्ट्रक्चर में स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, you have to read out the relations of the sphenomandibular ligament and the stylomandibular ligament. And for the relation, you have to read which one is lateral, which one is medial, which one is superior, which one is inferior. पढ़ोगे किताब में और 1 घंटा के बाद भूल जाओगे. Unless until you go through the dissection, unless until you read in the bone, it is very difficult for you to remember. अभी कोई synonyms बना करके उसको याद कर लेंगे 5 स्ट्रक्चर, 2 घंटा के बाद भूल जाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं. So what is required? We will on the bone we will read out which structure is medial and which structure is radial. Is it lateral? Okay. So now this one is the stylomandibular ligament. This one is the stelloid process. How you will identify the stelloid? The stelloid process is the property of or the intimate part of the temporal bone, and
spine of the sphenoid bone, as the name suggests, it is the part of the sphenoid bone. So sphenoid bone is anterior and posterior is the temporal bone. So sphenoid bone goes from here, and the styloid, from the styloid process there is a ligament which goes like this. ठीक, एक लिगामेंट यहाँ से कहाँ जाएगा? एंगल ऑफ द मैंडिबल, इज द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ramus ऑफ द मैंडिबल. ठीक, यहाँ से एक लिगामेंट यहाँ से इस तरह से यूं ऐसे चले जाएंगे. ठीक है. नाउ यू सी ये लिगामेंट, दिस लिगामेंट यू सी ओवर हियर ऑन द, here we have got the presence of the which gland? Parotid gland. Parotid gland is sandwiched in between the ramus of the mandible. ramus of the mandible को ऐसे पकड़ो और ये parotid gland है और यूं ऐसे आप ramus of the mandible को घुसा दीजिए on the posterior surface, on the medial lateral, on the three sides you have got the ramus, the presence of the parotid gland. So you have got the parotid gland over here. हम रिलेशन इसी में बताएंगे, हम उसमें नहीं बताएंगे, उसमें ड्रॉ नहीं करेंगे. चलिए रिलेशन. सो नाउ हियर ये देखिए यहाँ से इस जगह से गया और यहाँ से जाकर के ये कहाँ गया? इस जगह पे. सो ऑन द वन साइड ऑफ द पेन, ऑन द लैटरली वी हैव गॉट द पैरोटिड ग्लैंड एंड हियर वी हैव गॉट द सबमैंडिबुलर स्लैबरी ग्लैंड. क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है ना, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, इस जगह पर पैरोटिड ग्लैंड है. एंड दिस इज द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल फोसा. दिस इज द सबमैंडिबुलर फोसा. ये सबमैंडिबुलर फोसा है. और यहाँ पर मैं आपको इस जगह पे यहाँ से एक हो गया ये मीडियल और एक हो गया ये मीडियल और ये लैटरल. तो दिस स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट which is a derivative of the deep fossa. Deep fossa means deep cervical fossa. Deep fossa, and this investing layer of deep cervical fossa, and this divides the parotid gland from the submandibular salivary gland. Number one, attached from the base of the styloid process up to the angle of the mandible and the posterior border of ramus of the mandible. Clear? Now, regarding the relations, you open your book, you tell me the name of the structure, and I will show you. Styloid process, the spine, from the spine of the sphenoid bone, the ligament which go is known as the spinomandibular ligament, and the spinomandibular ligament is the derivative of the Meckel's cartilage, which is the derivative of, comes from the first pharyngeal arch. ये Meckel's cartilage का derivative है. और प्रोट्रैक्शन जब करेंगे, आप जब उसको प्रोड्यूस करते हैं, देन इट बिकम ए टॉर्च. एंड बोथ द लिगामेंट, द एक्सिलरी लिगामेंट, दे आर हेल्पफुल फॉर द इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन. रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए आपको दोनों ये हेल्प करेंगे. सो नाउ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज द रिलेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर, द स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट. हियर वी हैव गॉट द स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट. ओके. नाउ बिफोर you tell me the name of the structure, few structure I would like to say. यहाँ पर कोई चीज़ अगर है, प्रोन पोजीशन में, शीर्षासन में इसको रखे हुए हम, अब हम लैटरल से स्टार्ट करेंगे. तो क्या होगा? लैटरल स्किन होगा, सुपरफिशियल फासा होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. लैटरल में जब भी कोई स्ट्रक्चर बोले तो पहला अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो स्किन सुपरफिशियल फासा बोल देंगे तो पास 100% मार्क्स मिल गया. नाउ यू सी कम ओवर हियर. अब यहाँ हम आए, मैस्टेटर मसल यहाँ पर मिलेगा, मैस्टर यहाँ पर में है. ठीक. और आगे हम बढ़ेंगे. द एंगल ऑफ द मैंडिबल के पास, हियर द एंगल ऑफ द मैंडिबल ब्रांच व्हिच इज कंसर्न, व्हिच इज ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इज द मैक्सिलरी आर्टरी. मैक्सिलरी आर्टरी. और मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ निकलेगा? इसी जगह पे. सो मैक्सिलरी आर्टरी है किधर? लैटरल. मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ है? लैटरल. उससे ब्रांच निकला इधर, तो मैक्सिलरी आर्टरी इधर आपका लैटरल हो गया इधर. ठीक. तो मैक्सिलरी आर्टरी हो गया. यहाँ पर में टेम्पोरालिस मसल जा रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे टेम्पोरालिस मसल जा रहा है. यहाँ पर टेम्पोरालिस मसल जाएगा. तो टेम्पोरालिस आपका किधर है? लैटरल है ना. ये मेरा लिगामेंट यूं इस तरह से लिगामेंट है, तो टेम्पोरालिस क्या हो गया? लैटरल हो गया. ये हम पेन मेरा इधर है, यहाँ जो भी स्ट्रक्चर होगा सब इसका लैटरल होगा ना. मेरे पेन के इधर जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो लैटरल होगा. टेम्पोरालिस का भी कोरोनाइड प्रोसेस, ये कोरोनाइड प्रोसेस पे आ रहा है तो क्या होगा? ये लैटरल. ठीक. अब अगला होगा पैरोटिड ग्लैंड. बता दिए. हियर वी हैव गॉट द पैरोटिड ग्लैंड. द पैरोटिड ग्लैंड इज लैटरल. देन टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व.
ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व हम क्यों नहीं कहेंगे, हम टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व कहेंगे? बिकॉज क्यों हम कहेंगे इसलिए, बिकॉज ये मेरा लिगामेंट है इस तरह से और यहाँ पर मेरा पैरोटिड ग्लैंड है. वी नो फ्रॉम the anterior border all the branches of the facial nerve goes to the face, ऊपर से लेकर नीचे तक. These are all branches of the facial nerve. Why only the temporal branch of the facial nerve? Next. medial lateral हो गया, concept clear हुआ? lateral तीन ही है. इस ओम ऐसे होल्ड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया तो फिर से पूछ लो, बता देंगे. समझ में आया कि जो lateral relation के बारे में, we are talking about the relation of the sphenomandibular ligament, we are not talking about the relation of the temporal mandibular. उसी से आप relate कर सकते हैं. relation of the ना कि वो ठीक है चलिए, तो उसमें बुक में चेंज कर दिया. चलिए कोई बात नहीं. अगर इसको भी अगर पकड़े आप तो वही है आपका, यहाँ इस जगह से हम पकड़े, ये मेरा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, यहाँ स्किन सुपरफिशियल भाषा हो गया. पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर मैं, पैरोटिड ग्लैंड इज बोथ लैटरल एंड द मीडियल. लैटरल मीडियल दोनों साइड पैरोटिड ग्लैंड आपका है. पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर हो गया और टेम्पोरलिस मसल यहाँ पर में आपके हो गए. मैक्सिलरी आर्टरी के बारे में जिक्र किया गया तो मैक्सिलरी आर्टरी आपका यहाँ पर में आ जाएगा. चलिए और उसके बाद लैटरली क्या है, मीडियली क्या है? देखिए नाउ this is the this one is the temporomandibular joint. Here we have got temporomandibular joint. This one is the internal carotid artery. This is the internal carotid artery. क्यों कहें ये internal carotid artery है? Because this is the carotid canal. Through the carotid canal, the carotid artery enters like this, and you have got this much plate. This plate is the tympanic plate. This plate is the tympanic plate. So the tympanic plate separates the internal carotid artery from the temporomandibular joint, number one. Or tympanic plate comes to lie in between the temporomandibular joint or the internal carotid artery. Or internal carotid artery is separated from the temporomandibular joint by means of the tympanic plate. Or temporomandibular joint is separated from the internal carotid artery by means of the tympanic plate. tympanic plate ये है tympanic plate. पेट्रस टेम्पोरल का पार्ट है. बताते हैं पेट्रस टेम्पोरल बोन और टिम्पैनिक प्लेट का मार्जिन ही है आपका कैरोटिड कैनाल. फ्रॉम द लैटरल मार्जिन ऑफ द कैरोटिड कैनाल द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कम्स आउट. द इंटायर फोराम इन द कैरोटिड कैनाल इज लाइंग इनसाइड द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. ये प्लेट क्या चीज़ का पार्ट है? ये द प्लेट, यही प्लेट है ना जी. एक्चुअली दिस वन इज द प्लेट. ये प्लेट है ना, ये किस बोन का पार्ट है सर? टेम्पोरल बोन का पार्ट है. बोन का ये हो गया मस्टोइड प्रोसेस एक पार्ट, ये हो गया स्क्वैमस प्रोसेस दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हो गया पेट्रस, चौथा पार्ट हो गया पेट्रस पार्ट में जाएगा, लेकिन वो टिम्पैनिक प्लेट से सेपरेट रहेगा. ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि भेग बना दिया इसको. द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन is separated from the petrous part of temporal bone by means of tympanic plate. Internal carotid artery and TMJ is separated by tympanic plate. Tympanic plate separates the joints from the internal carotid artery. उसका दूसरा पॉइंट है spine of the sphenoid. Now, sphenomandibular ligament you have got is sphenomandibular ligament you have got over here. So sphenomandibular ligament का upper end इसके यहाँ पर में होंगे, यहाँ पर इस जगह पे. Next, auriculotemporal and coda-tympanic. Auriculotemporal and the coda-tympanic nerve. Auriculotemporal nerve, this nerve actually, this one is the foramen ovale. Here we have got the foramen ovale. I have got the foramen ovale here. And the foramen, from the foramen ovale, what is come? The mandibular nerve. Mandibular nerve यहाँ से निकलेगा और इसके एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन इसके होंगे. तो इसका जो भी ब्रांचेज होंगे, दे आर ऑल दिस, ये मिसलीडिंग टर्म्स है ये कि एक नर्व का नाम बता, सभी नर्व के नाम है. यहाँ मैंडिबुलर नर्व से जो भी ब्रांच इधर में है, सारे के सारे ब्रांच इसके मीडियल रिलेशन में. सो दिस वन इज द ये नर्व. नेक्स्ट, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. यू सी दिस वन इज द फोरामेन स्पाइनोसम. ये फोरामेन स्पाइनोसम है और इसी फोरामेन स्पाइनोसम से पास करता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ से पास किया तो मीडियल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. चलिए अब एंटीरियर रिलेशन बोलिए. lateral deltoid and masseteric nerve and artery.
व्हाट विल बी द एंटीरियर वन? एंटीरियर ने आगे की तरफ जो चीज रहेगा वो एंटीरियर, और पीछे की तरफ जो रहेगा वो पोस्टीरियर. सो नाउ यू सी दिस कि lateral pterygoid muscle, this comes from here, this comes from here. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का इंटीरियर है, ये यहाँ से आकर के एंड दिस विल गो अप टू दिस वन. यहाँ से आके कहाँ जाएगा ये? इस गुफा में घुसेगा ये. कहाँ घुसेगा? यहाँ से जाकर के ये इसको जाना कहाँ है? इसका मंजिल है यहाँ, lateral pterygoid muscle का. So lateral pterygoid muscle will be the anterior to the temporomandibular joint. Next, mesenteric nerve and artery. Here we have got the mesenteric nerve and artery. This fossa is in this notch is converted into foramen, and through this passes the mesenteric nerve and artery. So if anything is like this, which one is anterior, which one is posterior? My finger is anterior, and this is posterior. Clear? Now next, posterior relation. Posterior relation. Parotid gland separates the joint from the external auditory meatus. Yes. Here we have got the parotid gland. हमने क्या कहा था कि सैंडविच करता है इसको, इस तरह से ही जाएगा पीछे. So parotid gland is over here, okay, and you have got the external acoustic meatus over here. External acoustic meatus over here. और parotid gland आपका यहाँ है. ठीक है? तो इसको external acoustic meatus को इसको दोनों को सेपरेट करेंगे. Superficial temporal vessels. Superficial temporal vessels we know the medullary artery and superior temporal vessels यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इस जगह से medullary artery. Posterior relation यहाँ ऊपर की तरफ जाता है. Auriculotemporal nerve we know that it goes from there. Auriculotemporal यहाँ से medially से निकलने के बाद ये यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर temporal region में जाएंगे. हो गया? Next is superior relation. Superior relation. Middle cranial fossa, middle cranial vessels. Yes, this is the middle cranial fossa. ये है middle cranial fossa. ठीक, तो ये अच्छा किया है, बड़ा सा टर्म बोला यहाँ middle cranial fossa. सारे के सारे middle cranial fossa आपको क्या हो जाएंगे? ये superior हो जाएंगे. और मिडिल मेनिंजियल वेसल्स, यू सी द मिडिल मेनिंजियल वेसल्स इसी से घुसेगा ना, फोरामेन स्पाइनोसम से. फोरामेन स्पाइनोसम से घुसेगा और फोरामेन स्पाइनोसम से घुस के आपको जो है कि फोरामेन स्पाइनोसम से घुसेगा तो जो भी चीज रहेगा वो उसके सुपीरियर ही रहेगा. और inferior relation. Maxillary artery. Maxillary artery. Here we have got the maxillary artery. यहाँ इस जगह पर maxillary artery है, तो maxillary artery इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के इंफीरियर हो गया. ऐसे रखेंगे ना इसको ऐसे, तो मैग्यूलरी आर्टरी यहाँ इस नेक के पास आकर के देता है, तो ये सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया. ये तो सब अब सब क्लियर हो गया रिलेशन. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू सी कि हम इसको हटा देते हैं. यहाँ हमने बताया आपको क्या जा रहा है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. नाउ स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट यहाँ से गया, यहाँ पर ऐसे अटैच हुआ और इस जगह पे क्या घुस रहा है? इंफीरियर एल्वियोलर नर्व. इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी दोनों घुस रहा है. ये स्ट्रक्चर जब इसमें घुस रहा है और यहाँ पर में लगा हुआ है क्या चीज? इससे ब्रांच निकलेंगे और इसको पियर्स करके यहाँ चले जाएंगे. ये लिगामेंट यहाँ तक लगा रहेगा ना, यहाँ तक इस जगह तक लगा रहेगा, तो इसको यहाँ जाने के लिए इसको पियर्स करना पड़ेगा. तो ये मैंडिबुलर नर्व और वेसल इसको पियर्स करके तब यहाँ पर में आगे की ओर बढ़ेगा. सो inferiorly the sphenomandibular ligament is being pierced by the mylohyoid nerve and the vessels. कुछ लोग था जी, कितना लोग था? समझ में आया कि समझ में आया? तो बोलिए. डिस्क में हम दोबारा से पूछते हैं आर्टिकुलर डिस्क में, because now we have to move toward the movement. Articular disc divides the joint into upper compartment and the lower compartment. Articular disc divides the joint into lower compartment and the upper compartment. Number second, when we are talking about the lateral ligament, what we have told that the lateral ligament reinforces the capsule from the inferior end, from the lower end. Lower end में क्या किया उसको? Reinforce किया. By virtue of reinforcing this capsular ligament, the lower compartment of the capsule is having the firm attachment. Lower ये वाला capsule क्या होगा? Firm attachment. But since this compartment is a loose, this has got having a loose attachment. Okay? This is having the loose attachment and this one is having the firm attachment. Lower compartment is having the firm attachment and upper compartment is having the loose attachment. This loose attachment of the upper compartment allows the
But since the lower compartment is fixed, it does not allow, it does not give freedom to the head of the mandible to move like this. So here we get only the rotational move. Only the rotational move. And now this, whenever there is a rotation, this rotation is always along either in the transverse axis or this axis. रोटेशन किसी एक्सिस पे ही रोटेशन होगा ना, रोटेशन के लिए क्या चाहिए आपको, एक्सिस चाहिए. So the lower compartment you have got the rotational sort of activity, and in the upper compartment you have got the gliding movement. Why we have got the gliding movement? Because the upper compartment is the loose one, the capsule in the upper compartment is loose one, and the capsule in the lower compartment is firm one, tight one. So it allows only rotational movement. This allows the gliding movement. ये क्या करेगा, gliding movement. And by allowing the gliding movement, what will happen? This will also ऐसे glide करेगा तो आगे बढ़ेगा. Protraction will allow protraction. And while doing the protraction, this head of the mandible moves along with the articular disc anterior. क्या करेगा? हेड ऑफ द मैंडिबल इसके साथ एंटीरियर आगे की ओर बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ेंगे. और इस जगह पे रोटेशन होगा तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस के अराउंड मुंह खुलेगा, हिंज एक्सिस बनाएगा. सो इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, खाली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. क्लॉक इस हिंज लाइक एक्शन यहां पर आपको मिलेगा. सो वी हैव गॉट द एक्स. Number one, the horizontal axis. Horizontal axis passes from the one condyle to the other condyle. इसको रखो यहाँ मैंडिबल को पलट के रखो. पेन था ना यहाँ पे. The horizontal axis. This is the horizontal axis. This one is the horizontal axis. This will move like this from one condyle to the other condyle. From one condyle to the other condyle, this axis runs like this. But when you just open your mouth, जब आपका मुंह खुला हुआ रहता है तो 20 मिलीमीटर का गैप रहता है. बट when you open your mouth, एग्जाम में खराब नंबर आ गया, रसगुल्ला का बहुत बुरा पीस है. When you open your mouth fully, what will happen? This axis from this axis goes from here to the mandibular foramen के पास चला गया. ये एक्सिस और नीचे चला जाएगा, तब ना आपका मुंह खुलेगा. तो फुल्ली ओपन होने के लिए आप ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस मैंडिबुलर फोरामेन के पास चला जाएगा. इस जगह पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस चला जाएगा. एंड व्हेन यू ओपन द माउथ फुल्ली एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस पासेस फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन, नॉट फ्रॉम द कॉन्डाइल, दिस इज नोन एज टर्मिनल हिंज एक्सिस. दिस इज नोन एज टर्मिनल हिंज एक्सिस. ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनल हिंज एक्सिस. इस जगह से जब ये पास करेगा. सो in the upper compartment, we have got only the gliding movement, and here we have got the rotational movement. We are talking about the axis now. Horizontal axis बता दिए. Then we have got another axis, which is known as the vertical axis. The vertical axis passes from here. It passes from the condyle and follow the ramus of the mandible के posterior border. ये क्या कर, कहाँ से आएगा, ये यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के और इस तरह से यहाँ से आपको ये एक्सिस आप कैसे पास करेंगे. This is known as the vertical axis, and this vertical axis allows, अभी horizontal axis में भी ये नाचेगा, vertical axis भी नाचेगा. Vertical axis पे head of the condyle rotates when you do the side movement. जब ये side movement आप करते हैं, normally when you open your mouth, it do rotation in the horizontal axis or hinge axis. But when you do the साइड मूवमेंट, जब आप साइड मूवमेंट जब आप करेंगे तब ये रोटेट करता है किस पे, वर्टिकल एक्सिस. तब ये वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करेगा. किस पे रोटेट करेगा, वर्टिकल एक्सिस. क्लियर, दो एक्सिस हो गया, दो एक्सिस इंपॉर्टेंट एक्सिस है. एंड थर्ड वन इज द ट्रांसलेशन. कन्वर्ट इज द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मींस रोलिंग आउट. और ये कोंडाइल अपर एंड में आपको पूरा का पूरा ऐसे इसके साथ मूव करेगा एंड यू विल अलाउ टू द प्रोटेक्शन. जैसे आपका ये ऐसे आगे चला जाएगा. So regarding the movement, we have got number one is the depression, then we have got elevation,
protraction, retraction and side to side movement. This is also known as the chewing movement. Clear? So for the depression, mandible is called a bicondylar joint because they have got the temporomandibular joint on the other side. They work as a unit. That's why it is known as the bicondylar joint. For depression, and this is a three-dimensional sort of activity in the temporomandibular joint. It consists of three phases: rotation, gliding, and rotation. डिप्रेशन जब आप करते हैं इस तरह से जब आप करेंगे खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रोटेशन, देन ग्लाइडिंग एंड देन रोटेशन अगेन. ठीक, पहले मुंह कैसे खोले तो क्या करेगा? इंजेक्शन काम किया है और खोलेंगे आप तो क्या होगा? ये आपका मुंह आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ता है. जब हम ऐसे पूरा खोलेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा आगे की ओर, हम इसमें डेमोन्स्ट्रेशन के दिन बताएंगे, तो आगे की ओर भी आपका खुलेगा. और जब पूरा खोल दिया आप इसको तो वर्टिकल एक्सिस भी आपका काम करने लगेगा और तब ये आपको जाकर के डिप्रेशन मिलेगा. यहाँ पर ऐसे पहले ये क्या करेगा? ये ऐसे हल्का सा पहले ये रोटेट किया ऐसे, पहले ये हिंज एक्सिस बनाया, मुंह खुला कर जाएगा, देन यू विल शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट करेगा तो ये थोड़ा हल्का आगे बढ़ेगा और फिर रोटेट करेगा थोड़ा साइड में. So in all the three things together, the rotation, the gliding movement and the rotation again, this creates the depression. ये तीनों चीज मिल करके ये डिप्रेशन क्रिएट करेंगे आप. Done by the lateral pterygoid muscle. Lateral pterygoid muscle यहाँ पर ये gliding वाला काम है वो कौन करेगा? Lateral pterygoid muscle, and the rotation will be done by the geniohyoid, mylohyoid and digastric muscle. ठीक, geniohyoid, mylohyoid and digastric muscle ये तीनों मिल करके या और suprahyoid muscles ये तीनों मिल करके आपको रोटेशन वाला काम करेगा. रोटेशन वाला वर्क will be done by the geniohyoid, mylohyoid and digastric muscle. Gliding work will be done by the lateral pterygoid muscle. और डिप्रेशन में एकमात्र मसल है that is known as the lateral pterygoid muscle. एकमात्र मसल डिप्रेशन का वो है lateral pterygoid muscle. So lateral pterygoid more refined पूछेगा कि in the case of depression, lateral pterygoid muscle do which part? So it does the gliding part. जो gliding portion है डिप्रेशन का वो वाला portion जो है उसकी lateral pterygoid muscle rotation is begun. At this point, when you do like this, all infrahyoid muscle they will fix the hyoid bone. Hyoid bone को पकड़ के रखेंगे, उसको fix करके रखेंगे, and this will allow you for the depression. ये depression movement में आपको जो होगी ये help करेगा. So now elevation, अब आप elevate करेंगे इसको. Elevate में क्या होगा? रोटेशन का रिवर्स, ग्लाइडिंग का रिवर्स और रोटेशन का फिर रिवर्स, सब उल्टा हो जाएगा. नहीं, जितना आप ऐसे किए थे अब आप एलिवेट कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. एंड ऑल द मसल्स व्हिच डू नॉट डू द डिप्रेशन दे डू द एलिवेशन. pterygoid, temporalis एंड द masseter muscle. तीनों के तीनों मसल जो कि आपका डिप्रेशन नहीं करते हैं वो तीनों का तीनों क्या करेंगे? एलिवेशन वाला पोर्शन, वो तीनों का तीनों एलिवेशन वाला पोर्शन करेंगे. क्लियर? नाउ वन इज द प्रोट्रैक्शन. ये आगे जो खींच के बोलने में क्या है आपको? आगे भी हमारा कौन सा मसल है? इस जगह पे एंट्रीन यू हैव गॉट द लेफ्ट pterygoid muscle over here. You have got the medial pterygoid at this end. इस एंड में आपका medial pterygoid muscle है. This will pull like this. क्या करेंगे? खींचेंगे इसको. The protraction part will be done by the medial pterygoid and the left pterygoid muscle. You have got the पीछे से आ रहा है आपका ये temporalis. temporalis किधर है? इस जगह पे ये
यहाँ से इस जगह से यहाँ है टेम्पोरल, इस जगह से यहाँ है, ठीक है। सो द टेम्पोरल इज एंड द वेस्टर दिस विल डू द रिट्रैक्शन। क्या दोनों क्या मिलकर क्या करेंगे, वो रिट्रैक्शन करेंगे। When our mouth, जब ये हम ऐसे करके पकड़ किसको रखे हैं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। जब मुंह पे मुंह दोनों सटा के आप रखे हैं, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। व्हाई सो? बिकॉज द टू टीथ कम टुगेदर एंड दे क्रिएट द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। एंड अबव दैट द लैटेड मसल आपको आगे की ओर इसको पुल करके रखता है और टेम्पोरल पीछे की ओर पुल करके रखता है, जिसके वजह से आपका ये जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है वो स्टेबल रहता है। ताकि कोई नीचे से ब्लो करेगा, ऐसे कर लीजिए, यहाँ कोई ब्लो करेगा आपको तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को यहाँ पर कोई ब्लो करेगा तो आपको कोई खतरा नहीं पहुँचेगा। लेकिन आप ऐसे किए हुए ऐसे कोई मारेगा तो फट से दांत टूट जाएगा, नहीं ऐसे करोगे ऐसे कोई मारेगा तो टूट नहीं जाएगा, नहीं आराम से टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्लिंच किए हुए हैं तो आपका ये कोई ब्लो करने से आपका ये टूटेगा नहीं। एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। और इसमें 200-300 पाउंड फोर्स जो है इसमें लगता है। नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल पॉइंट। इन द क्लिनिकल पॉइंट जो देयर इज वन कॉल्ड द डिस्लोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट, डिस्लोकेशन ऑफ द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट यहाँ से आर्टिकुलर ट्यूबरकल इसको रोकता है और आर्टिकुलर ट्यूबरकल से ये बाहर निकल जाता है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल से ये बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकल गया तो कहाँ आर्टिकुलर ट्यूबरकल से बाहर निकल गया, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आके बराबर है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आके बराबर है। तो डिस्लोकेशन होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टू रिड्यूस इट, अगर यहीं से पकड़ के आप इसको डालेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश फ्रॉम द थर्ड मोलर टीथ के नीचे से, यहाँ से आपको इसको पुश करना है, ऊपर की ओर लेके जाना है, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ इट बैकवर्ड, देन यू हैव टू ड्रॉ बैकवर्ड, तब जाकर इसका यूजुअली रिडक्शन होगा। सेकंड इज द डिस्क डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इज द डिस्क डिस्प्लेसमेंट। व्हाट हैपेंस, ये जो डिस्क है आपका, ये जो डिस्क है ये इसके साथ ये ऐसे छोटा हो गया, यहाँ पर मैं आपका जॉइंट है, हेड ऑफ द मैंडिबल है, एंड हियर यू हैव गॉट द आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये वाला जो पोर्शन है आपका वो है रेट्रो डिस्कल एरिया, जिसमें कि ब्लड वेसल्स है। व्हाट हैपेंस इन दिस डिस्क is displaced with this one, ये इधर दोनों की दोनों इधर कहाँ चले जाएगी, इस जगह पर चले जाएगी। ये डिस्क वाला पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था वो कहाँ आ गया, डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया। अब क्या करेगा हेड जब जाएगा यहाँ से ग्लाइड करेगा कहाँ जाएगा, यहाँ पर में जाकर इसको रोक देगा, इसे यहाँ पर रुकेगा नहीं। और फिर जब आप मुंह को बंद कीजिएगा ये वापस इधर की हो जाएगा, तो इस पे टकरा रहा है और वापस इस पे वापस चला जा रहा है, फिर जा रहा है तो यहाँ पर जाके इसको रोक दे रहा है, फिर वापस ये चला आ रहा है। दिस प्रोड्यूस ए क्लिकिंग साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लिकिंग साउंड। जितना बार वो उधर जाएगा उधर आएगा, वो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ एंड दिस इज नोन एज द रिवर्सिबल डिस्क डिस्प्लेसमेंट, इट्स कॉल्ड रिवर्सिबल डिस्क डिस्प्लेसमेंट। बट जब बार बार कॉन्स्टेंटली ऐसा होते रहेगा कॉन्स्टेंटली, और जब ये यहाँ चला गया तो पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा। पोस्टीरियर वाला पोर्शन क्या करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा ना। जब ये आगे चला गया तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। और जितना बार आप अंदर की ओर आएंगे उतना बार क्लिकिंग साउंड के साथ पेन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दिस इज फुल्ली वेस्कुलर एंड नर्व सप्लाई साइड। तो जितना बार उसको दबाएंगे आप जितना बार आप मुंह क्लोज करेंगे उतना बार ये दबेगा, उतना बार आपको पेन होगा। अभी तक नहीं हो रहा था बिकॉज इज इनहेल्पफुल, इसलिए इसमें टकराव भी आता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट जब ये यहाँ आ गया, व्हेन रेट्रोडिस्कल कम्स इन द सेंटर, यू पुश इट एंड इट क्रिएट द पेन। क्लिकिंग साउंड के साथ आपको पेन भी मिल जाता है। सो अब जब इसको पेन होगा तो ये क्या करेगा, अब ये मुंह खोलने का कोशिश नहीं करेगा, जाएगा थोड़ा दूर जाकर के यहाँ भाग जाएगा, तो थोड़ा दूर जाकर के यहाँ पर ये वापस भाग जाएगा। एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन इज नोन एज irreversible disc displacement. Irreversible disc displacement. But fortunately, since this is supplied by the artery and the blood vessels, this becomes the scar tissue.
ये क्या हो जाएगा, स्कार टिश्यू हो जाएगा। स्कार टिश्यू होने के बाद क्या हो जाएगा, पेन आपका कम जाएगा। स्कार टिश्यू में क्या हो जाएगा, पेन आपका कम जाएगा और ग्रेजुअली रिजॉल्व कर जाएगा, बट यू कैन नॉट ओपन द माउथ फुली। तो ये तो इनका यही, ये तो यहाँ से भागा नहीं, उसको जब तक आप नहीं हटाएंगे यहाँ से, और ये वाला स्कार बन गया तो पेन खत्म आपका हो जाएगा, रिवर्सेबल नहीं हो सकेगा और मुंह को ओपनिंग आपका कम जाएगा। क्लियर? कुछ भी चेहरा में कोई हल्का भी मुस्कुराहट नहीं है, न गम है, न कुछ इसमें है ना। आप इसको डिस्को हटा दीजिए यहाँ से, इसको डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से रिमूव करके इसको वापस जाके यहाँ पर कर दीजिए, करेक्शन हो जाएगा। क्या